Move on to our second panel discussion, which is augmenting appearance through technology. Technology bodalauchi chehra. Ata purbaru request karibi to please play the AVs. देशर जड़े सुनामधन्य चर्म रोग विशेषज्ञ होउछंती डॉक्टर प्रदीप सेठी। दिल्ली एम्स रे शिक्षा लाभ एवं डेराडून और ऋषिकेश रे सफलतार सह प्रैक्टिस करिबा परे केस समस्यार स्थायी समाधान पाई प्रतिष्ठा करिसेंती यूजेनिक्स हेयर साइंसेस। 14 वर्ष हैला एही अनुष्ठान चंदापणरू मुक्ति दे अनेकंक मुहरे हस फुटई पारिछि। डॉक्टर आरिका बंसल सह मिसी लिखिछंती स्टेप बाय स्टेप हेयर ट्रांसप्लांटेशन नामक पुस्तक। सफलतार शीर्ष रे पहुंचीबा परे सामाजिक कार्य भावे निजस्व उद्यम रे प्रतिष्ठा करिछंती उत्कल गौरव इंटरनेशनल स्कूल, जहार मूल उद्देश्य हेउछि मागणा रे उन्नत मानर शिक्षा प्रदान। परमहंस जोगानंदनक आदर्श रे अनुप्राणित डॉक्टर सेठी पिलामानंकु सेही नीति आदर्श रे परिचालित हेबाकू परामर्श देबा सह पाश्चात्य शिक्षा पद्धति सह आध्यात्मिक शिक्षार सम्मिश्रण कराइछंती। वर्तमान सीबीएसई सिलेबस सह नियमित योग, ध्यान, कंप्यूटर और संगीत आदि शिक्षा दे पिलामानंक उत्तम भविष्यत गढ़िबार पण करिछंती। एही महान डॉक्टर को स्वास्थ्य संवाद और कनक न्यूज रा शुभेच्छा और अभिनंदन। डॉक्टर सेठी ए कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व मु गोटे दार्शनिक प्रश्न आपण सामने रखापी चाहिए। फिल्म बाला बोधे आम भितर अनेक देखी थे, तो मु जानापी चाहिए बेले बेले मो भितर प्रश्न आसे, दुनिया रे कहीं कला हवा उचित नुहे, दुनिया रे समस्ते सुंदर देखा जावा जरूरी आपण टर्म अनुसार। अर्थात अति एक भाषाटी टिके खराब लगे मो पार्टी बाहर बेलू तथापि लोक बुझला भली मु शब्दटी उच्चारण करी। दुनिया रे कई काली झील रही समस्ते गोरा हो दरकार। ए प्रकार नारेटिव आम कहीं तैयारी करुचु जो आम कहूँ चंदापण हूँ दुखदायक कथा, समस्ते भल बाल नहीं केश नहीं बंचवा उचित। यही आदर्श उपर आपन इंडस्ट्री तैयारी होइछि कि डॉक्टर प्रदीप सेठी? No, not at all. Actually, at least not mine. And I don't endorse this that कि समस्त गोरा हवा दरकार, समस्त मुंडरे बहुत चुट्टी हवा दरकार। दैट इज नॉट माय स्टेटमेंट और आई एंडोर्स। हाउएवर लोक मानकु जो लोक मानकु जो माने भावंती कि व्हेन दे सी द पर्सन इन द मिरर हु इज नॉट बॉल्ड, हु इज फेयर, हु इज वेल काइंड ऑफ ग्रूम्ड, सेही मानकु ही समान आछंती जस्ट टू मेक देमसेल्फ बेटर इन टर्म्स ऑफ लुक्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस। ने मु ये कहया पे चाहूँ कि आमे गोटे नैरेटिव तैयारी करिछो कि सुंदर केमती देखा जीवो। गांधी केबे केबे भावी नथिबे तांको मुंडरे हेयर ट्रांसप्लांटेशन हवा दरकार। चंदा मुंडरे गांधी होउचंती पृथ्वीर भारत वर्षर सबुठारु बड़ ब्रांड। तेणु आपण कोन अधिका काम करछन जेतबेले गोटे लोक भितरे कहउचंती चंदा हवाटा गोटे अभिशाप? नो मनोरंजन भाई जमा मोर सेटा स्टेटमेंट नो आउ जेमती स्टार्टिंग एवी रे देखेले कि आई प्रमोट द इंटरनल ब्यूटी एंड समहाउ आई हैव गॉट द स्किल। मो हाथ गोटे स्किल अछि वेयर आई कैन extract and plant hair and I can restore the hair. तो सेथ में I do that, but definitely I don't promote that कि सुंदरता पाई चेहरा, स्किन कलर किंबा चुट्टी दरकार। सेटा मोस्ट स्टेटमेंट नो। तो ये टेक्नोलॉजी रो कोन आदर्श रही कोन आपण करिया पे चाहुचंती एक्चुअली? सो मनोरंजन भाई ये एक्चुअली आम कौन करे जो जगार चुट्टी ना से जगार एक्चुअली देयर इज ए प्रॉपर दिस इज अ साइंस ऑफ ट्रांसप्लांट जेमती लिवर ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट दिस इज ए प्रॉपर साइंस वेयर इज वन ऑर्गन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन एरिया एंड प्लांटेड somewhere else. It's a proper science and fortunately or unfortunately this is comes under cosmetology, but this is a science proper. And since like I have mastered that and जो मान भावंती सेटा कले they will look better से माने आसंती and we all have only one life, गोटे जीवन। तो समस्त लगे फिजिकल बॉडी इज एवरीथिंग। तो से माने से फिजिकल बॉडी को केमिति कंजर्व करिवे वेदर लुक हो कि अन्य ऑर्गन हो, सो दे वर्क फॉर दैट, बट देयर इज समथिंग हिडन। तो आपन को टेक्नोलॉजी ऊपर कथा हवा प्रदीप बाबू, किंतु ए अनूप जेलेटा जांको बयस बोधे 65 वर्ष रु अधिक 68 नाउ। हां 68 तलत अजीज जांको बयस 67 रु 68 से आपनकर क्लाइंट। तो ए माने ए 70 वर्ष को टच करने जाऊँगी से मैंने कहीं चिंता कले जे आम हेयर ट्रांसप्लांट करूँ? जमी मुझे कहली वन लाइफ, वी ऑल हैव ओनली वन लाइफ है ना। इफ देयर इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच इज सेफ, अफोर्डेबल,
and which is there is no maintenance into that. You've proven, and you have got a medical setup or a doctor who can do it, and he has got proven things under his belt. So they all have attempted that, and they have taken that. That's it. Yeah. तो को टेक्नोलोजी आपण प्रयोग करंती ए ट्रांसप्लांटेशन क्षेत्र रे एटा मनोरंजन भाई जो हेयर ट्रांसप्लांट कौन हुए कि आप निज बॉडी रो जो जगह एमती चुट्टी अच्छे जोटा व्हिच इज रेजिस्टेंट टू द मेल हार्मोन सो यू नो यू हैव टू टेक फ्रॉम दैट एंड यू हैव टू प्लांट वेयर देयर इज नो हेयर सो दैट इज इन ए सिंपल टर्म जमी आमर धान रुआ जाए गोटे जगह धान नहीं अन्न गोटे जगह धान रुहती तो एक्जाक्टली दैट इज प्लांटेशन ओनली बट आमे जोटा द वे वी डू दैट वी हैव टर्म्ड एज डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट that was actually our invention we published in 2013 so सेठी हम कोन करछु माने गोड मतलब दिस इज देयर इज ए कॉमन सेंस कि आपन को गुड ऑर्गन ता बॉडी रु बाहरला आ गुड बॉडी रे विद इन फ्यू मिनिट्स इफ इट इज प्लांटेड देन इट इज सेफ विद इन द होमलैंड तो दैट कॉन्सेप्ट रे वी डिजाइन दिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट तो सेतिर हमें एक्सट्रैक्शन एंड प्लांटेशन we do within few seconds or few minutes. So our survival rate has gone up to like close to 99%. If we put 100 hair, the 19 hair are growing, and we have mastered that over last like 10 years in 2012-13. So this direct hair transplantation was. तो body रो गोटे natural reaction अछि जदि हम medical science जानिनी भलो भाबरे प्रत्येक body गोटे foreign element को सबले reject करे. True. तो आपण जतबेले जबरदस्ती मुंडरे हेयर प्लांटेशन करूचंती सेतबेले बॉडी रो रिएक्शन कोन होय एटा मनोरंजन भाई एटा होची आपनकर ऑटोलोगस आपण निजरो बॉडी निजरो ऑर्गन निजरो टिश्यू सो इट विल नॉट बी रिजेक्टेड जदि एटा बाहरु किछ होतांता जेमिति आपण कहले एनी अदर सब्सटेंस दैट विल बी ट्रीटेड एज ए फॉरेन बॉडी एंड दैट विल बी बॉडी विल ट्राई टू थ्रो दैट आउट रिएक्ट अगेंस्ट दैट तो सिंस दिस इज योर ओन ऑटोलोगस ऑर्गन तो दिस विल नॉट बी रिजेक्टेड एटा रिजेक्ट होबनी हुएनी हां तो मु जानि बॉडी रे मने कर अनेक प्रकार रोग अछि आपण कोन टेस्ट करी देखंती जे प्रकृति रे बॉडी रे सूट करबो कि नाही ए ट्रांसप्लांटेशनटा जदिओ जड़े लोक हुए तो सुंदर देखा जाई पारे किंतु परवर्ती समय ता बॉडी रे किछि इंपैक्ट हबनी से अफेक्टेड हबनी अलगा रोग द्वारा यार गारंटी कौन डॉक्टर सेठी इटा एक्चुअली तार दीटा पार्ट आई वुड लाइक टू आंसर दैट इज प्री ट्रांसप्लांट ऑफ कोर्स वी स्क्रीन द पेशेंट ताको भलो करी स्क्रीनिंग करा जाय वेदर तार ही इज फिट फॉर दिस प्रोसीजर और नॉट प्रोसीजर इज वेरी सुपरफिशियल माने बहुत 2 to 3 मिलीमीटर प्रोसीजर बट इट इन्वॉल्व द होल बॉडी मेडिसिन दिया जाए एनेस्थेसिया लोकल एनेस्थेसिया लगा जाए यू नो एंटी मेटाबोलाइट सॉरी एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिसिन्स आर आल्सो गिवन तो बॉडी रो तार सब ऑर्गन गुड़ा लिवर किडनी शुड बी दे शुड बी फिट ब्लड प्रेशर ठीक होगा था यू नो ब्लड थिनर वी स्क्रीन द पेशेंट प्रॉपर्ली जब स्क्रीन नहीं चाहिए आम फिट भाविले देन वी डू द प्रोसीजर एंड अगेन इफ समबडी स्किल्ड he has got expertise and since I said it is autologous then the chance and if it is planted within 1 week if there is anything would happen suppose तार गोटे रिएक्शन है फॉलिकुलाइटिस है इन्फेक्शन है रिजेक्शन है जहाँ भी हम गोटे सप्ताह भर हो एंड इफ इट इज विदिन 1 week everything is normal then तापर आउ चांस नहीं किसी रिएक्शन हबार कारण ऑटोलोगस जमी मुझे कहले ऑटोलोगस बोले आपन निजर बॉडी रो गोटे पार्ट नहीं आपन बॉडी लगाई तो तार रिएक्शन हबार चांस गोटे सप्ताह पर एई केस रे न आपन कोन गारंटी दउछन जे सतरे किछि हबनी बोली कारण ह्यूमन बॉडी को जानिबाटा केते एते सहज नुहे मनीष भितर बहु प्रकार केमिकल रिएक्शन हुए तो मो बॉडी हुए तो वर्षे पर या रिजेक्ट करि पारे किछि रिएक्शन हेई पारे केमती आपण गारंटी देबे जे जणे हेयर ट्रांसप्लांट कर दबो देखिबा पई सुंदर हबो भलो फोटो आसीबो फेसबुक रे भलो लागिबो लाइक्स मिलिबो किनु परवर्ती समय हुए तो मु समस्या रे पड़ी पारे ए गारंटी आपण केमती देबे जे आपण समस्या रे पड़िबे नाही हेयर ट्रांसप्लांटेशन करले भी hair transplant kala actually there are some things which we can you know imagine or we can figure out predictable जिन छोड़ा था जोड़ा मैं कहली कि विदिन 1 week जदि किछि हला किछि हबो 1 week पर जदि बॉडी सेटल हेगला स्किन हे गला ताले एई जो टिश्यूटा प्लांट करगला जो ग्राफ्टटा प्लांट करागला ताटू किछि साइड इफेक्ट होवार चांस नहीं हाउएवर अन्य किछि स्किन रिएक्शन ड्यू टू अन्य अदर थिंग्स सपोज सोरियासिस हला कि अन्य गोटे लाइकन प्लांट्स हला एडा गोटे सम आपन में टेक्निकल टर्म हे पारे सेगुडा दे आर लाइक अनरिलेटेड जिंस हे पारे हां दैट आई कैन नॉट गिव गारंटी बट सप्ताह परे आउ किछि नुवा जिंस हे जिवो स्काल्प रे चुटी लगा परे जदी जणे यू नो क्वालिफाइड इंटेलिजेंट एंड स्किल्ड डॉक्टर करछि तार चांस नाही तो आपनकर आउटलेट बर्तन दुबई रे काम करूछि नोएडा रे मुंबई रे भुवनेश्वर रे तो लोक कोन बहु संख्या रे चाहउचंती हेयर ट्रांसप्लांटेशन करिया पई एक्चुअली एवरी थर्ड पर्सन इज बॉल्डिंग इन टर्म्स ऑफ बॉल्डिंग बोले
they think they can afford and they can do it. तो सही हिसाब से demand definitely जिम्मे आपण celebrity को ना कहले सब almost everybody is getting it done left right and they feel it is doable and को सेलिब्रिटी माने आपनकर क्लाइंट के इटी कहबे कि माने कंसेंट देथिबे आपण निजे कहि सालानी तो लोक कर ना कहि सालानी हां तो आपण केते नियंती सेलिब्रिटी को ठारू हेयर ट्रांसप्लांटेशन पाए so it is other way around. Celebrities, of course, like we don't do that kind of practice. I mean, practice corona. This is a medical business, to be very honest, and so both जिनसे ता भीतर देखिया को पड़े. So we आमर एमिति करछु जे आमे we will cater to every types of patient. So मतलब socio-economic status रो from lower middle class रो जो माने they come to us to the higher middle class. So we do almost all. So तो लोअर मिडिल क्लास हेतले कोन रियाती किछि मिलिबो सेलिब्रिटी मानन ठरो आपण अधिकार नियंती आमे एक्चुअली कोन करछु हमर समस्त क्वालिफाइड डॉक्टर माने अछंती डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन हम संगे जो काम करछंती तो डेफिनेटली मी एंड डॉक्टर आरिका दे आर द फाउंडर्स and we have gathered the skill in our hands for last since my AIIMS days. I would calculate since my MD days in 2005. So definitely if somebody comes to us, the packages are a little bit higher because of our time and skill. But we have got junior doctors who have been trained by me. 5 वर्ष 6 वर्ष हेलान हम संगे रचन they are equally good. But definitely तांका नाटा होची अलगा मो ना होची प्रदीप सेठी आउ कोन ना हला प्रियदर्शनी she is with us for 5 years. So we don't send any patient back. And we try to give them the services, the same quality that I give to the celebrities or your big profile. तो दुबई रे टेक्नोलॉजी रो हब बोली कहा जाए दुबई को तो आपण ओडिसा रो डाक्टर दिल्ली मुंबई रे काम करचंती चलिबो किंतु दुबई रे आपण कोनमती चमत्कारिता देखौछन्ते लोक आछंती फॉरेनर माने आपण को पाखकू दुबई एक्चुअली मनोरंजन भाई एक्चुअली सर अछंती गुलरिया सर इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी एंड अदर डॉक्टर्स आर देयर you know that Dubai does not produce medical brains. Actually, medical brain hub is India, definitely. And Dubai, at least the medical brains nahanti. On your technology thibe bode. But the best of the doctors in the world are from India. And Dubai, we have opened that is a good gateway to the Europe and the West. Dubai is pura junction ta pura. So that people would just for visibility we have there in Dubai. But definitely my heart and soul is in India and we are our basis center 80 chalisi and Dubai pe amara India tourism bahut hochi. We get close to 60 to 70 patients come to India to get the hair done from us. They come through the route of Dubai. So Dubai amara ota hochi you can say catchment point where we do consultations primarily and get them to India. So Dubai definitely technology samdi kisi nahi technology to eta jo hair transplant it is from the brain and the skills in the fingers. So tar jo instrumentation they are not very costly. It is the skill which is very costly which is in the doctor's hands. Dr. Sethi आपण ये skill को काहे कि acquire करया पई चाहिले good question. So actually mu MD complete kali AIIMS through dermatology 2008 June number sarla I was just talking to Guleria sir. Then somehow there was no senior residency for me at that time in AIIMS re. Senior residency would tha 3 years would experience period tha. I wanted to have that. AIIMS re my dermatology training was excellent. Emiti nathila mate sabu kuch jana thila but still I still wanted to stay few more years in AIIMS. Unfortunately there was no senior residency then back then during my time. So and Odisha re bhi nathila hetaro kichh ma option nathila and there was a good hospital thila Dehradun. They called me for a job. And once we landed there, me and my wife both, so they said only one doctor can be absorbed and another doctor has. They did not they did not have anything for me. So I started a practice in Rishikesh. So I was very hungry. I was 28 then. I was extremely hungry because I knew no one in Rishikesh and I started my practice and of course the training of AIIMS was there and there was no dermatologist in Rishikesh and within 6-7 months I was getting like hundreds of patients and then AIIMS re kon thila again sorry mate English se khaya boduchi Dr. Guleria knows that in AIIMS the training is very very different and the dermatology training was very very it was challenging. That was giving a lot of things food to my brains to all the doctors who get training there in other medical colleges. So barse bhitar mate like I should do something which I have not done. So then around that was hair and which I never done, never seen. So I started researching, went all over the country, all over the world to gather information. And we started hair transplant. That was the new thing, very challenging. In 2009 and in 2010, February 28 was the first procedure. And within 1 year, I realized
that I should be doing only one thing. There comes the teachings of Paramahansa Yogananda that in the AV they showed. What he says that do small things in extraordinary ways, be the best in your line, and dig your well at one point. Gotte jagar kuo kholo, multiple jagar kuo kholle tumuko pani miliboni. So these two concepts were there, and it was challenging to me. The new thing that I have never done, it was challenging. And hair grows. Once you plant, do it well, it grows. Gratification. And though it is cosmetic, but a lot of people when they're like, who is unfortunate, it should not go to their brain and psyche, but still a lot of people they get affected by that, and when they're bald, and when that grows well. So it was not that mastered by a lot of doctors all over the world. So there was a challenge for me. I wanted to outwit myself and gather the skill. We continued. We just put down our head down and continued to work. And within 2 years, 3 years, 4 years, people from all over the world started coming to us. And I never knew that people are watching me. And within 6-7 years, from all over the world, they started recognizing us, endorsing us. So in that way, then I realized that the money that I make from there, and of course we are making good money out of that, and the money I'm putting back in my village, in the school that we are making. So that is the business, medical business that I do, and I'm continuing to excel. आपण बहुत चैरिटी करंती एवं गाँ स्कूल रे पिलांको पाठ पढ़ाउचंती एवं अनेक गुड़िए काम हाथ देइचंती. पर लास्ट क्वेश्चन रहिबो डॉक्टर सेठी जे जो हेयर फॉल होची एटा को हमें जेनेटिक बोली कहि परिबा जे जीन रो कारण रो हेयर फॉल हुए. No, okay. So the hair fall, actually there are two types of hair fall. When we say hair fall, this is a very random, non-specific thing. Gote jhiyo jodi chutti kundauchi ta paniyara jodi 50-60 ta chutti achi, that is very normal. That is not at all hair fall. But if it is more than 100 consecutively for many days, then we have to address that. There should be some insult, whether it could be medical, non-medical. There should be some insult. We should try to catch that. That will be only done by a qualified doctor who knows that. So that is the random hair fall that we routinely talk about. The other thing, the baldness is due to the male hormone. Male pattern baldness due to the effect of male hormone. Everybody who is there, who is a male like me and you, who have got a male hormone in their blood vessel, they are potentially bald. So that is not the chanda avada goto rogo no. If somebody is bald, he is unlucky. Somebody not bald, he is lucky. That's it. As I said, everybody potentially bald. So if again here the hair transplantation is I would say hair transplant is not successful if the doctor or the team doesn't know how to stop the ongoing miniaturization of the hair. So that is by a medical program, and the doctor should be master of that as well. So hair loss and baldness, dita ko tikke alga kardele, the things will be clear. Okay. बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप सेठी. आपण अनेक गुड़िए कथा कहले गोटे नुआ टेक्नोलोजी रो प्रयोग जे आ उपरे वितर्क थाई पारे जे मनीष केमती सुंदर देखा जीवो जे प्रकृत रे सबु चंदा लोक माने हेयर ट्रांसप्लांट करवा उचित कि नुहे. ये गोटे नैतिक प्रश्न. किंतु मेडिकल साइंस जदि आपणक भितरे जाको आम इंग्राजी रे कहूँ बॉडी शेमिंग, जदि आपण शरीर को नहीं दुखित ताले मेडिकल साइंस तार गोटे सॉल्यूशन दउची. आउ से आर्ट को बिजनेस रे लगै छंती डॉक्टर प्रदीप सेठी. बहुत धन्यवाद आपनका मतामत पाए. थैंक यू. थैंक यू. Thank you so much. I'd now request Ms. Tanaya Patnaik to kindly join us on the stage and felicitate Dr. Pradeep Sethi. And due to some unavoidable circumstances, Dr. Arika Bansal could not join us this evening. I'll request Dr. Pradeep Sethi to kindly receive the memento on Dr. Arika Bansal's behalf. Sir, I request you to also receive it on behalf of Dr. Arika. Thank you so much. I'd like to thank Mr. Mishra for wonderfully moderating the session. Thank you.